Namaste, salam, sat shri akal. In this video, I am going to explain you third house. So, third house, it is related to communication, journey, like travel and brother sister. So, communication, transportation, and local community are all governed by the third house. Third house gives communication. Most of communication take place between the native and her brother sister. How you apply intellect in your communication to form mental connection, how to use intelligence to think, process, and share information, feelings to best adjust to the environment. So, the communication is not only spoken and written, but also subconscious between two individuals, possibly siblings. सो थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन, ट्रैवल और ये जो मोस्टली कम्युनिकेशन जो है वो ब्रदर सिस्टर के साथ इसको शो करता है. तो थर्ड हाउस आपको कम्युनिकेशन देता है, बातचीत करने का तरीका. तो कैसे आप अपना इंटेलेक्ट जो है वो आप अपने कम्युनिकेशन में अप्लाई करते हो, जिससे कि एक अच्छा मेंटल कनेक्शन बनता है. जब दो लोग बात करते हैं तो आप अपने, एक तो होता है कि सिर्फ बात कर लेना, एक होता है कि आप अपने दिमाग को भी एट ए टाइम आप यूज करते हो टू थिंक, प्रोसेस, शेयर. तो ये सिर्फ स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन नहीं है, ये सबकॉन्शियस भी है. So it helps, third house helps to build close relationship with peers, siblings, co-workers and classmates. Third house rules over different modes of communication, जैसे कि टेलीफोन, मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्ट, रिटन, स्पोकन, टेलीग्राफी, रेडियो, ये सब. ये आपके इट ऑल्सो शोज योर करेज. तो ये आपकी करेज को भी बताता है. और इफ वी टॉक अबाउट ट्रैवल, नेचर ऑफ ट्रैवल, सो लोकल टूर or short distance getaway, it also governed by third house. And education up to 12, all sorts of profession related to communication and travel comes under the domain of third house, जैसे कि मीडिया, जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, ब्रॉडकास्ट, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, रेलवे, ये सब. The body part third house govern: shoulder, arms, hands, upper chest, lungs, collarbone, ears. So in mundane astrology, you will get to know about neighboring countries and their relationship with them, the treaties they have signed together. Thank you for watching this video. Please don't forget to like this video and subscribe my channel. Thank you.